Greetings everyone, welcome to your English class. Today we are going to start the chapter Albert Einstein at School, which is written by Patrick Pringle. And here in this video we are going to discuss the brief summary of this chapter. This chapter especially tells us about the famous genius of all times, Albert Einstein, who once was a failure at his school. So this chapter reveals his miserable time at the school and how he was suspended from there. This chapter is telling you about the same. The story begins with young Albert being in his history class. Okay, this chapter beta starts with history class and the teacher Mr. Brown asks him about a certain date, to which Albert admits that it is pointless to memorize dates. कुछ हिस्ट्री टीचर, क्योंकि हिस्ट्री टीचर हैं, कुछ वाटरलू की जो बैटल हुई थी उसके बारे में वो डेट्स कंफर्म करते हैं. एंड टू विच एल्बर्ट एडमिट्स दैट इट इज़ पॉइंटलेस टू मेमोराइज डेट्स. ओके, क्योंकि हम इन डेट्स को बुक में भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ही वॉज ऑफ थिंकिंग दैट ही कैन फ्लिप थ्रू द पेजेस वेन एवर ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट द डेट. जब भी उन्होंने बताया कि वो जब भी उनको किसी भी डेट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसमें गो थ्रू हो सकते हैं. मीन्स ही कैन फ्लिप थ्रू द पेजेस, जिस भी डेट के बारे में उनको जानना है. दस ही डिड नॉट बिलीव इन मगिंग ऑफ फैक्ट्स. तो इस तरह से जो भी फैक्ट्स होते थे या जो भी डेट्स होती थी तो उनको वो लर्न करने के लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे. In this story we learn about the father of modern physics. Okay, Mr. Albert Einstein. हम अच्छे से जानते हैं उनको. And Albert shows his dissatisfaction towards the system of cramming historical facts and date. उन्होंने अपनी dissatisfaction show की है इस chapter में. And Albert Einstein is known all over for his valuable contribution to physics and the theory of relativity. However, this story brings forth his school days which were not that pleasant. जो इनके school days थे वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे. Naturally, everyone must think that such a genius mind would have excelled at school. Naturally, obviously सभी लोगों ने यही सोचा होगा कि इस तरह का जो जीनियस है उन्होंने स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्सेल्ड, मीन्स बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स गेन की होंगी. बट इट wasn't so when he was in school. Means he did not get that type of achievement when he was in school. He was not a brilliant child. Okay, हम ऐसे बोल सकते हैं. Einstein did not like his home too, as he was not comfortable there. उसको अपना घर भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था there. In fact, Einstein did not like school to an extent that he thought of never passing the exams to get the school diploma. कि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि स्कूल डिप्लोमा गेन करने के लिए एग्ज़ाम्स को क्लियर करना और ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, मैंडेटरी होती हैं. एज ही लाइक साइंस ओनली, ही विशेज़ ही कुड स्टडी जस्ट दिस सब्जेक्ट ओनली. क्योंकि उसका एक साइंस में ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, सो ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग दैट ही कुड स्टडी जस्ट दिस सब्जेक्ट. Okay, moreover he doesn't understand the reason why he needs to study other subjects where his interest does not lie. क्योंकि उनका बाकी सब्जेक्ट्स में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो वो ये भी रीज़न सोचते थे that why he needs to study other subjects, कि बाकी सब्जेक्ट्स को रीड करने की क्या रिक्वायरमेंट है, where his interest does not lie, जहाँ पर उनका इंटरेस्ट नहीं था. In short, we can say that Albert Einstein shows his dissatisfaction towards the system of cramming facts and dates. Consequently, we learn that Albert does not like school. Consequently, as a result, we come to know the fact that Albert Einstein did not like school as it adopts traditional methods of teaching. क्योंकि exams and all the things are the same, क्योंकि traditional methods adopt किए जाते थे, so he does not like school at all. He dislikes the conventional forms of education. Similarly, the teachers also don't have much liking to him. Actually, the teachers do not like to him. Okay, do not like him. वो भी ज़्यादा liking नहीं रखते थे. They consider him a disgrace and the history teacher especially did not like him. वो क्लास में उसका होना एक क्या मानते थे, एक disgrace मानते थे, means insult मानते थे. Okay, and especially the history teacher, he did not like Albert Einstein. And when this incident happens in history class, okay, जब ये incident हुआ history class में, when Mr. Brown asks about asks Einstein about the battle of Waterloo in which the French were defeated by the Prussians, Albert Einstein did not give any answer. After that, they sent him to Munich and the story repeated there too. Albert did not take any interest there. उसने वहाँ पर भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया and was only wasting his father's money. He now has an happy honey
epiphany of giving up a school together, so he asks his friend Yuri to arrange for a doctor. Actually he had made up his mind, उन्होंने अपना mind बना लिया था that he did not want to go to school there, so he asks his friend, तो उनके जो friend थे यूरी, उनको बोलते हैं किस चीज़ के लिए, to arrange for a doctor. He plans to ask the doctor to write him off as a lunatic. lunatic क्या होते हैं, mad. ओके तो उन्होंने सोचा, और डॉक्टर जो अर्नेस्ट थे, आप इस चैप्टर में रीड करेंगे बेटा, डॉक्टर यूरी फाइंड्स डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, उनको क्या बनाना चाहते हैं, वो क्या अरेंज करना चाहते हैं, ही कुड मैनेज अ फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट. So he plans to ask the doctor to write him off as a lunatic, not fit for school. वो डॉक्टर से ये लिखवाना चाहते हैं that he was not suitable for the school, okay, not fit for the school. तो वो उसको क्या राइट करके दे दे, डॉक्टर उसको lunatic, mad राइट करके दे दे सर्टिफिकेट बनाकर. Upon meeting with the doctor, Albert Einstein confesses his love for mathematics. Okay, upon meeting with the doctor, जैसे ही फाइनली वो डॉक्टर से मिला, he accepted that he had great love for mathematics too. After that, the headmaster calls him and reveals shocking news to him. और क्या रिवील किया, he tells Albert that due to his behavior they are not asking him to leave school. ओके वो उनके स्कूल का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो उनके हेडमास्टर ने उनको कॉल किया और एक शॉकिंग न्यूज़ उनको रिवील की, और क्या बताया, दैट ड्यू टू हिज बिहेवियर, ओके, बिकॉज ही वॉज वेरी रिबेलियस देयर ऑफ नेचर, ओके, सो उन्होंने क्या बताया, दे आर नॉट आस्किंग हिम टू लीव स्कूल, दे फील दैट हिज बिहेवियर डिस्टर्ब्स द एनवायरनमेंट फॉर स्टडी. ओके का स्टडिंग के लिए क्या है, उन्होंने डिस्टर्ब कर रहे हैं एनवायरनमेंट को. इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर एल्बर्ट एज ही वॉज रेडी टू present the medical report, but before that only the school restricted him. तो इट वॉज अ सरप्राइज फॉर एल्बर्ट, क्यों, बिकॉज ही वॉज गेटिंग हिमसेल्फ रेडी फॉर द मेडिकल रिपोर्ट, वो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे. ओके सो डॉक्टर अर्नेस्ट, आफ्टर दिस Dr. Ernest Weil, okay, the doctor helps Yuri certify that he needs a 6-month break from okay school due to his nervous breakdown. Albert is on the 7th heaven, wants to hand it over in the school and never go back there. वो वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहते थे. And finally you will come to know here in this chapter Mr. Koch. Okay, Mr. Koch, the mathematics teacher, praises Albert Einstein. And Albert Einstein, he admires Einstein's ability in maths, and he was ready to give reference letter to him. And Albert requests Mr. Koch to write a reference letter so that he could get admission in the Italian Institute for Mathematics. तो उन्होंने उनको request किया. Okay, and finally, upon, as you can see here, upon meeting with the doctor, Albert confesses his love for mathematics. उन्होंने अपना love accept किया. Okay, means now you can see that Albert behaved in a very impolite manner with the history teacher, Mr. Brown. He starts with an argument, वो उन्होंने argument से start हुआ, and finally leaves the school without even looking back and only meets Yuri, who bids him farewell and wishes him luck for his future. And finally he leaves the school, okay, without even looking back, and he meets only Yuri, his friend, और उन्हीं को मिला, उन्होंने उनको he bade him goodbye and wished him luck for his future. And here is the conclusion of the chapter, beta, Albert Einstein at school. Sum up, we can say that Albert Einstein at school summary, we learn even the most genius minds did not have an easy life. हमें ये पता लग गया ना कि जितने भी जो जीनियस माइंड होते हैं उनकी लाइफ भी क्या होती है, इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल दैट मेक्स अस व्हाट वी आर, और हमें ये अंडरस्टैंड करने के लिए पॉसिबल करवाती है दैट वेयर वी स्टैंड फॉर, कि हम कहाँ पर खड़े होते हैं. सो दिस चैप्टर बेटा इज़ अ कमेंट ऑन द वे एजुकेशन इज़ बीइंग इम्पार्टेड इन मोस्ट ऑफ द schools. Too much emphasis is laid upon mugging up useless facts and dates.